इस सेक्शन में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की गई है विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइए देखते हैं 4 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो पॉपुलर मीडिया में आपने देखी ही होगी, एंड यू ऑल मस्ट नो व्हाट दीज टू ऑफिशियल पोजीशंस आर। द रियल कंफ्यूजन अराइजेस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। While Council of Ministers is a constitutional body, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाउएवर, मेजरली जो पॉपुलर मीडिया में सुनाई देता है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। आइए डिस्कस करते हैं क्या रोल है इन सारी ऑफिशियल पोजीशंस का। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन इंडिया। ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। ये सारी बातें प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट, पावर्स, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, क्वालिफिकेशंस के बारे में आर्टिकल 52 to 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएंगे। The next position is Prime Minister. Prime Minister, we all know that even though President has so many titles, he is only a representative head of the country. The main power lies in the head of Prime Minister. जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। वी विल सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। प्राइम मिनिस्टर का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कम जगह किया गया है, मेनली आर्टिकल 74 एंड 75। The main body for today's class that we're going to discuss about is Council of Ministers. Council of Ministers का mention आपको आर्टिकल 74 में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है there shall be a council of minister to aid and advise the president. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स है जिसका फंक्शन है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंशन आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। Next, cabinet ministers. Even though they are not mentioned in the constitution or anywhere, they are a functional part of the government. They are mainly senior ministers who hold important portfolios. जैसे कि आपका रेलवेज, पावर, एजुकेशन, इस टाइप के जो मिनिस्ट्रीज होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है एंड उनको काफी रेगुलरली कंसल्ट किया जाता है। कमिंग टू द अपॉइंटमेंट पार्ट, अपॉइंटमेंट आपका आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, which says that the prime minister shall be appointed by the president. Now ये आपका constitution में दिया हुआ है, we know how it actually works. How it really works is that there is an election. आपके MPs का election होता है. Once you elect your MPs, we get to know which party wins. And then the party decides the prime minister candidate. Once the party decides the prime minister candidate, उनको symbolically appoint किया जाता है president द्वारा. So technically जो president का appointment है prime minister का, that's only symbolic. But अगर आपके exam point of view से देखा जाए, आपके exam में अगर पूछा जाए, तो obviously prime minister is appointed by the president because ultimately he is the one who makes him give oath. Then other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. All these council of ministers hold office for the pleasure of the president. ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 में दिया हुआ है that there shall be a council of minister to aid and advise the president. तो जो मेन फंक्शन है वो है aid and advise the president. प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन प्लस अदर मिनिस्टर्स का फंक्शन इज टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली जो भी प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं, दैट डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में जो फ्रेमिंग है सेक्शन की वो ये है दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। नाउ देयर वाज अ कंफ्यूजन दैट अरोज बिकॉज ऑफ दिस मैटर, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रेसिडेंट रेफर बैक कर सकते हैं एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू रिकंसिडर, और कैन he makes a decision by himself without considering the advice of council of ministers. तो स्कोप क्या है इस एडवाइस का, और क्या प्रेसिडेंट उस एडवाइस के आउटसाइड एक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये रिजॉल्व हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जहां पे एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया इस प्रोविजन सेक्शन में।
which said provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Which means, अब इसमें कुछ important terms हैं जो देखे जाए. President may require the council of ministers, यानी कि president की मर्जी है, if he wants he can send the advice back to council of ministers to reconsider such advice. यानी कि एडवाइस चेंज करने के लिए नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट, ओनली टू रिकंसिडर द एडवाइस. Advice either generally or otherwise. He can send the whole advice back or he can send specific particular parts of it to be reconsidered. And once that advice comes back, यानी कि council of ministers जब एडवाइस को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे तो फिर प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा. He shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. He will not have any option. वो जब एडवाइस वापस आएगी प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. नाउ वी कम टू जुडिशियल रिव्यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आ जाता है इस कि क्या कोर्ट्स देख सकते हैं क्या एडवाइस टेंडर की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने और क्या वो एडवाइस ठीक है या नहीं. ये आपका रिजॉल्व किया गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में, जहां पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट shall not be inquired into any court. So, if we read it again, whether any and if so, what advice? क्या कोई एडवाइस दी गई थी और अगर एडवाइस दी गई थी तो क्या एडवाइस दी गई थी by the council of ministers will not be inquired into any court. So this was a bar on judicial review. इस प्रोविजन पे एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट मिला एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1994 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कोर्ट ने कहा although Article 74 Clause 2 bars judicial review so far as the advice given by the ministers is concerned, it does not bar scrutiny of the material on the basis of which advice is given. इसका सिंपल मतलब ये आ जाता है कि क्या एडवाइस दी गई थी, whether any advice was given, and if so, what advice was given, cannot be looked into by the court. However, documents on the basis of which advice was given can be looked into the court. The material on the basis of which advice was given can be looked into the court. So, एक specific scope of judicial review है of the advice of council of ministers. ज़्यादा broad नहीं है ये, but still there is some amount of judicial review in the sense that the court can say that the advice was given on the basis of faulty material.